गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30। विकास प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग। परशुराम कुमार जी, गुड इवनिंग। डियर एस्पिरेंट्स, इस प्रकार से आइए चलें आज पुनः सिविल सर्विसेज एकेडमी जसीडीह देवघर झारखंड की सौजन्यता से हम अपने अ, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और इसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से प्रश्नों पर विचार करते हैं, जो सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मिस्टर आलम इज ज्वाइनिंग अस। यस मिस्टर आलम, गुड इवनिंग। और आज के जो प्रश्न हैं, तो पॉइंट नेमो, सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर से आज हम देंगे। तो पॉइंट नेमो, NEMO, which was seen in news is located in which ocean? तो ये कौन से महासागर में पॉइंट नेमो अवस्थित है, ये आपने बताना है। कि प्रसाद जी आ गए, गुड इवनिंग। तो पॉइंट नेमो, आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? ए अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, और डी इंडियन ओशन? Dear aspirants, if you are knowing the answer, you should write it in the chat box. और मिस्टर आलम का आंसर आ चुका है, और the answer to this question is Pacific is the correct answer. Pacific is the correct answer. पॉइंट नेमो अभी हाल ही में समाचारों में था, तो आपने बताना है कि ये इसकी अवस्थिति क्या है, ये कहां पे लोकेटेड है, इन विच ओशियन? डियर एस्पिरेंट्स, इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। विकास प्रजापति के लिए थम्स अप। टू यंग इंडियन नेवी ऑफिसर्स अब्रॉड, INSV तारिणी recently crossed Point Nemo in South Pacific during Naviga Sagar Parikrama. Point Nemo is the oceanic pole of inaccessibility, the farthest point from any landmass on Earth. It is located in South Pacific Ocean and is named after Captain Nemo from 20,000 leagues under the sea. It lies about 2,688 kilometers from the nearest land. The closest human presence is often astronauts aboard the International Space Station. The region has minimal marine life and is used for a space junk disposal due to its remoteness. So this is all about Point Nemo. तो आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से बताया. So this is very nice, dear aspirants. Now here comes another question. Caimanera and Bokuron ports, these are the ports which were seen in the news, are located in which water body? A. Black Sea, B. Guantanamo Bay, C. Red Sea, and D. Hudson Bay. बे का मतलब खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी. सो डियर एस्पिरेंट्स, इसका उत्तर क्या होगा, ये बताएं, खोजें. कैमानेरा एंड बोकेरोन, और परशुराम जी ने बताया इसका आंसर बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो Guantanamo Bay is the correct answer. And let us find out the reference. The US president signed an executive order to prepare a large-scale migrant detention center at Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, located in southeastern Cuba, is a sheltered inlet with strategic importance near the Windward Passage. It is served by the ports of Caimanera
and Bukharin. So, dear aspirants, Simple Boy Ansari. गुड इवनिंग सर, आप बता रहे हैं तो बहुत बहुत गुड इवनिंग आपको भी. सो दिस इज द आंसर. और ये हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हुए हैं, चयनित हुए हैं, पदासीन हुए हैं, तो ये माइग्रेंट्स जो वहां उनके देश में हैं, तो वो जो इलीगल हैं, जिनके पास में वैधानिक अधिकार नहीं है उस देश में रहने का, तो उनके प्रति वो काफी कठोरता पूर्वक ओके डिपोर्ट करने की तैयारी. और भारत में भी पहला खेप उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजा. डियर एस्पिरेंट्स, तो ये उसी संदर्भ में ये प्रश्न. एंड दिस इज ग्वांटानामो बे, BAY, लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न क्यूबा. आइए देखें, एक और प्रश्न ले लेते हैं और इसमें SMR, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. व्हाट इज द नेम ऑफ मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, for development of a small modular reactors? Small modular reactors, SMR. So dear aspirants, now you have to find out the correct answer. SMR, what is the name of the mission recently announced by the Indian government for development of a small modular reactors? Now the options are A, आत्मनिर्भर न्यूक्लियर मिशन, बी, ग्रीन एनर्जी न्यूक्लियर प्लान, सी, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, एंड डी, सस्टेनेबल एटॉमिक एनर्जी प्लान. So Mr. Parsuram Kumar is answering correct. C is the answer, nuclear energy mission. So nuclear energy mission is the name of the mission recently announced by Indian government for development of a small modular reactors. Mr. Alam, your answer is also correct. So the finance minister announced a 20,000 crore nuclear energy mission to develop indigenous small modular reactors. SMRs are small nuclear reactors with a maximum output of 300 megawatt, okay, electricity producing 7.2 million kWh per day. In comparison, large nuclear plants generate over 1000 megawatt and 24 million kWh per day. SMRs are small, modular, and reactor-based, generating low carbon electricity. They have a small footprints, lower capital costs, and can be factory built. SMRs can be deployed in locations unsuitable for large nuclear plants. They support incremental power additions, energy hubs, industrial heating, district heating, and hydrogen production. So, dear aspirants, सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर की ओर से जो दिल्ली प्लेटफॉर्म पे मारे गए 18 ओके 18 डेड पर्सन्स, और फिर महाकुंभ प्रयागराज में जो भगदड़ में मारे गए लगभग आई थिंक 35 to 40, सबके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं. और यदि आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में आप पीटी देने वाले हैं और आपके जैसे अन्य परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सो दिस इज माय मैसेज, दिस इज माय पर्सनल अपील to all of you dear aspirants whosoever are preparing for the competitive exams like the UPSC, state civil services, railway, RRB, group D, NTPC, SSC. Okay, you should be careful, okay, because if you are not there,
हु विल होल्ड द कंट्री? देश को कौन अपनी हथेलियों पे लेगा? और इतनी सारी तैयारी के बाद लगातार आप जब इस तरह से अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर आगे क्या होगा? प्रिय अभ्यर्थीगण, अचानक से अफवाह में और अचानक से उन्माद में लिए गए निर्णय हमेशा आत्मघाती होते हैं. These decisions which are emotionally taken, okay, emotion bound, are really suicidal. You should take care of. यदि आप हैं तो हमारा देश है. यदि आपकी जीवंतता है तो हमारे देश की जीवंतता है. आप समझेंगे इशारों इशारों की बात. मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कह रहा हूं, आप समझेंगे. सावधानी सबसे बड़ी जीवन रेखा, जीवन के लिए एक ऐसी रेखा जो आपको हमेशा हमेशा परेशानियों से बचाएगी. अपना ख्याल रखेंगे. और निर्णय लेने की बात हो तो भावुकता में, भावना में, उन्माद में, उत्साह में कदापि नहीं. आइए देखें, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं और यह है श्री गोवीश्वर टेम्पल. गोवीश्वर, GOWREESWARA, गौरीश्वर. गौरीश्वर टेम्पल which was seen in the news is located in which state? महाकुंभ मारे गए सभी आत्मा को ओम शांति. सर, मेरा कुंभ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में पूरा होगा ऐसा उम्मीद है. ग्रेट, वंडरफुल. ये है परशुराम जी की पंक्तियां और ये काफी उत्साह भरी पंक्तियां, सच से जुड़ी पंक्तियां, सच में नहाई हुई पंक्तियां. ओके, बहुत अच्छा लगा. आपने बताया कि लवासना ही आपका महाकुंभ है. तो ये जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं, आप सभी का महाकुंभ लवासना हो. आप सभी का महाकुंभ लवासना हो. डियर एस्पिरेंट्स, घर में भी कुछ लोग सुबह में स्नान करते हैं, कुछ लोग दोपहर में स्नान करते हैं, और घर की जो महिलाएं हैं वो 3 से 4 बजे स्नान करती हैं, जब दोपहर का लंच सभी लोग ले चुके होते हैं और अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके होते हैं. ये पूरे भारत की कहानी है. 3 से 4, 5 तक हमारे घरों की महिला सदस्य स्नान करती हैं. कुछ लोग सुबह में स्नान कर लेते हैं, घंटी बजाते हैं भगवान की, ओके, भजन गाते हैं भगवान के. तो क्या जो बाथरूम में नहाते हैं वे स्वच्छ नहीं है? कौन सा पुण्य, कौन सा पराक्रम? नहाने से ही पुण्य और पराक्रम होगा ऐसा तो कुछ भी नहीं है. महाकुंभ, देवता जो आए थे स्नान करने के लिए वहां, किसी ने देखा क्या उनको? वो दिखाई पड़े क्या किसी को? इतने सारे वैज्ञानिक तकनीकी में कोई देवता तो कैमरा में नहीं आया. ना तो आज तक चैनल, ना तो वो DD1 के चैनल में कोई देवता दिखाई नहीं पड़ा. कहा जाता है कि देवता आते हैं शाही स्नान में, मौनी अमावस्या में, और कौन कौन में. अरे वो पानी है, गंगा का पानी है. और इस तरह से हाइप क्रिएट करना, हाइप क्रिएट कर करके इस तरह से लोग मरे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं. तो कहने की बात यही है कि ठीक है, महाकुंभ है, आता है, ये पौराणिक है, प्राचीन काल से जुड़ी हुई बात है. तो प्राचीन काल से तो और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है, उनको भी तो जीवंत किया जाए, अपने आप में समाहित किया जाए, मनाया जाए. वो सारी बातें कहां हो गई? तो इस तरह से व्यवस्था के नाम पर काफी कुछ होना चाहिए और सोचना चाहिए था कि 143 करोड़ 143 करोड़ का ये देश किस प्रकार से वो छोटे से स्थान में डुबकी लगाएगा
और किस प्रकार से हमारी रेल व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार से उसे सफल कर पाएगी। जल मार्गों से भी, हवाई मार्गों से भी और सारे मार्गों से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक बात और है, ये सारी की सारी जवाबदेही सत्ता दल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म तो सबका है। तो सभी ने मिलजुल कर, सारे दलों, सारे लोग इसको कम से कम सफल बनाने का कार्य करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें, श्री गौरीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तमिलनाडु। अब ये क्यों चर्चा में आया? इसी मंथ फरवरी 2025 का ये करंट अफेयर्स है। श्री गौरीश्वर टेम्पल चेराई इन केरला, ए इज द आंसर, has ended a century old practice of requiring men to remove upper garments before worship। मतलब पूजा के समय अपर गारमेंट को हटाना। द ट्रेडिशन वाज ए सोशल कंस्ट्रक्ट लिंक्ड टू द कास्ट सिस्टम। ये जाति प्रथा से संबंधित था, नॉट ए स्क्रिप्चुरल रूल। इट ओरिजिनेटेड टू इंश्योर द पुनूल ब्राह्मण सेक्रेड थ्रेड वाज विजिबल। पुनूल, हम लोग उसे उपनयन कहते हैं, जनेऊ जिसे कहा जाए, तो वो विजिबल हो, दिखाई पड़े। डियर एस्पिरेंट्स, चेराई गौरीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन केरला, built in 1912. The temple's idol was installed by Sri Narayan Guru, a social reformer who fought against caste oppression. साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे संत महात्मा और बहुत से ऐसे सभा समिति समाज हुए जिन्होंने जाति प्रथा का पुरजोर विरोध किया। डियर एस्पिरेंट्स, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दोज ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट पर्संस, पर्सनैलिटीज, चूंकि मेंस एग्जामिनेशन में वो आपको दिखाई पड़ेगा। Some major Kerala temples still enforce this rule, like Sri Padmanabh Swami, Guruvar and Ittumanur temples। तो ये गौरेश्वर टेम्पल की घटना है और इसलिए ये समाचारों में, दी हिंदू में अपना स्थान पाया, इसलिए मैंने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। डियर एस्पिरेंट्स, इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट, which ministry oversees the tonnage tax scheme? Now you should know what is tonnage tax. TONNAGE, tax scheme. Dear aspirants, A, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, B, Ministry of Finance, C, Ministry of Commerce, and D, Ministry of Powers. So what should be the आंसर टू दिस क्वेश्चन? टनेज टैक्स स्कीम ये किस मंत्रालय से संबंधित है, आपको बताना है। टनेज टैक्स योजना। सो ए में बी दिस इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर परशुराम कुमार जी, ये बिल्कुल सही आंसर है। पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय से ये जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बजट आया 1 फरवरी, 1 फरवरी को 25-26 का जो बजट आया, दिस एक्सपेंडेड द टनेज टैक्स स्कीम टू इंक्लूड inland vessels under the Indian Vessel Act 2021. So this question is very, very important for yes, Vikas ji, correct, for your with UPSC prelims examination perspective. Dear aspirants, the Indian Vessel Act 2021 promotes safe, economical inland water transport and ensures legal uniformity. The scheme falls under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It was introduced in 2004 under the Indian Finance Act. The expansion encourages cargo movements and incentivizes shipping companies to invest in inland waterways vessels. So, dear aspirants, I hope you have understood this very important current affairs
news item. Okay, now one more question from current affairs. Okay, dear aspirants, Koleru Lake. So first of all, you will have to uh, recognize, find out the location of this lake Koleru, Koleru, which was seen in the news, is located in which state? A. Andhra Pradesh, B. Orissa, C. Kerala, and D. Tamil Nadu. So what should be the answer? Okay, dear aspirants, इन्वायरमेंट का जहां तक सवाल है, तो इन्वायरमेंट के सेगमेंट में आपने निश्चित रूप से इसे देखा होगा, पढ़ा होगा. Okay, so are you able to answer this question, dear aspirants? कोलेरू लेक काफी इंपॉर्टेंट लेक है. डी बता रहे हैं तमिलनाडु में. नो, दिस इज इन आंध्र प्रदेश. एपी, विकास प्रजापति, योर आंसर इज करेक्ट. The National Green Tribunal (NGT) restrained the Andhra Pradesh government from proceeding with 6 infrastructure projects in Koleru wetland. While we discuss wetlands, you should be knowing Ramsar. Okay, Ramsar wetland list. Dear aspirants, it's a place in Iran. और वहां पे ये वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए मीटिंग हुई. एंड डियर एस्पिरेंट्स, बहुत सारे भारत में भी ऐसे स्थल हैं जो रामसर साइट्स के रूप में जाने जाते हैं. सो डियर एस्पिरेंट्स, आंध्र प्रदेश का ये शैलो फ्रेश वाटर लेक है कोलेरू लेक, और बहुत बड़ा है. इट लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज नियर इलुरु, ELURU. It is Asia's largest shallow freshwater lake, covering 308 square kilometers. It acts as a flood balancing reservoir and drains into the Bay of Bengal via the Uppateru River. Uppateru River. So you should know these facts, because केवल यही सवाल नहीं हो सकता, ये भी वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा लेक है जो उप्पुटेरू रिवर में ड्रेन होती है. They may put a question. It was declared a wildlife sanctuary in 1999 and a Ramsar site in 2002. Okay, अभी रामसर साइट की चर्चा हो रही थी और आपने देख लिया. So it's also a Ramsar site, dear aspirants. It is an important bird area, IBA, on the Central Asian Flyway, hosting species like Siberian cranes, pelicans, and painted storks. So, dear aspirants, this is all about the Koleru Lake. Okay, Koleru Lake and some associated facts regarding Koleru Lake in Andhra Pradesh. So, अब आगे चलते हैं और ऐसे ही अब एक क्वेश्चन ये है, ब्लैक काइट, KITE, ब्लैक काइट, ए प्रे बर्ड, PREY, प्रे का मतलब शिकार, शिकारी चिड़िया है, इज मेनली फाउंड इन व्हिच रीजन्स. तो ये कहां पाई जाती है? ए अंटार्कटिका, बी ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ Australasia, Eurasia, and Africa, C Arctic tundra regions, and D only in India. So what should be the answer? Black kite, dear aspirants, KITES, black kites. So black kites were recently found nesting in a tower structure in Chennai. एक चेन्नई में टावर स्ट्रक्चर है, तो वहां पर इसको पाया गया. They are medium-sized birds of prey from a Accipitridae family. Unlike other raptors, RAPTORS, they are opportunistic hunters, often gliding in thermals to search for food. They have brown plumage, dark wingtips, bead-like dark brown eyes, and a hooked black beak. Their habitat ranges from wetlands and coasts to grasslands and woodlands.
They are mainly found in tropical regions of Australasia, Eurasia, and Africa. They are monogamous and from lifelong pair bonds. So, dear aspirants, B is the answer. इस प्रश्न का उत्तर बी है. बी इज द आंसर. और यस परशुराम जी, यू आर करेक्ट. बी इज द आंसर. तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमने आज चुना जो करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसमें काफी. नाउ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट you have to name the state government. So which state government has launched India's first WhatsApp based governance platform named Mana Mitra? Dear aspirants, one thing I would like to mention, संसद टीवी को शाम में 6 बजे अवश्य देखें. प्लीज वॉच संसद टीवी एवरी डे 6 p.m. ओके. काफी ऐसे ऐसे वो टॉपिक्स लाते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते. टुडे टॉपिक वाज सोशल मीडिया. ओके, द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया. इस टाइप के टॉपिक्स आपको ऐसे पेपर में मजबूती प्रदान करेंगे. आपको एक कंटेंट मिलेगा और जो डिस्कशंस होते हैं उसके माध्यम से आपका इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी. सो डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी, यू शुड वॉच संसद टीवी इन द इवनिंग. ओके, 6 p.m. There are so many programs, but this discussion program is worth to watch. So, okay, Sarji. Thank you, Mr. Kailasa ji. So, which state government has launched India's first, भारत का पहला WhatsApp based governance platform named Mana Mitra? A, Madhya Pradesh, B, Gujarat, C, Andhra Pradesh, and D, Karnataka. So, dear aspirants, if you are able to answer this question, please try and write your answer in the chat box. Well, Gujarat, no, this is not the answer. Gujarat, ये गेस वाला आंसर हुआ. आंध्र प्रदेश has launched Mana Mitra, MANA-MITRA, Mana Mitra. C is the answer, Andhra Pradesh. It provides 161 civil services, making government services easily accessible. Citizens can avail public services directly via WhatsApp, enhancing digital governance. Developed in collaboration with Meta, META, the platform marks a major innovation in service delivery. More services will be added in the future to further improve accessibility. तो ये है करंट अफेयर्स. इस प्रकार के प्रश्नों पर जब आप दृष्टिपात करते हैं तो ये होता है करंट अफेयर्स. एंड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड टुडे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू योर upcoming prelims examination. Dear aspirants, now let us see this question. Which country has developed? किस देश ने विकसित किया है the high energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system? What is the full form? What is the abbreviated form? Helios. 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 And what is the enlarged form? High energy laser with integrated optical dazzler and surveillance system. A, France, B, Australia, C, Russia, and D, United States. Dear aspirants, you have to put your answer in the chat box. ABCD type of question. Okay. C is the call given by Mr. Parsuram ji, but this is not the correct answer. The correct answer is D,
United States. The US Navy successfully tested the high energy laser with integrated optical dazzler surveillance Helios laser weapon on the USS Preble in 2024. Helios, developed by Lockheed Martin, can destroy targets or disable electronics. It generates over 60 kilowatt of energy with upgrades reaching 120 kilowatts. The test japped an aerial drone confirming operational capability. Lasers offer a cheaper alternative to missiles, crucial in regions facing drone and missile threats. Challenges include power supply, weather conditions, and system integration. The Navy plans to expand laser weapons, aiming for cost-effective and efficient डिफेंस। सर वो पहले के आंसर था। अच्छा, वेरी गुड। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से आज हम लोगों ने अपने इस क्लास को अपग्रेड किया, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिया। तो आइए एक और देख लेते हैं। व्हिच कंट्री हैज क्रिएटेड द फर्स्ट एवर कंगारू एम्ब्रियोज यूजिंग इन विट्रो fertilization? In vitro fertilization, you all know IVF. Sometimes you might have seen it in the front page of the newspaper, Daily newspaper, Hindi newspaper. A, China; B, Australia; C, Russia; and D, France. So, are you able to answer this question? The name, you have to name the country which has created the first ever kangaroo embryos using in vitro fertilization. So, kangaroo relates to Australia. So, the answer is Australia. Okay, great. So, a very quick catch. Australian researchers created the first ever kangaroo embryo using the in vitro fertilization IVF. This was achieved through intracytoplasmic sperm injection ICSI. ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये यूपीएससी है, कहां से वो क्वेश्चन लाएंगे। सो ICSI, a technique used in human fertility treatments. So similar to the human fertility treatments. Scientists from the University of Queensland used ICSI to create a stun grey kangaroo embryo. Now, stun grey kangaroo. This is also important. Embryos by injecting a single sperm into a mature egg. Over 20 embryos have been successfully produced. Dear aspirants, now let us see our concluding question of the day. Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary is located in which state? Do you know the location of Pong, P-O-N-G, Dam, D-A-M, Lake? A, Himachal Pradesh; B, Uttarakhand; C, Madhya Pradesh; and D, Maharashtra. If you are preparing for UPSC type of examination, dear aspirants, you should know the national parks, WLS, wildlife sanctuaries, biosphere reserve, okay, BR, tiger reserve, TR. These are very, very important. So Pong, B is the call given by Mr. Parsuramji, but the answer is A, Himachal Pradesh. Himachal Pradesh in 2025 annual bird count at Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary recorded 1,53,719 birds from 97 species, the highest ever. तो बर्ड चिड़ियों का भी सेंसस होता है और ये देखिए इसी साल में एनुअल बर्ड काउंट एट पोंग डैम लेक took place and it was found that 1,53,719 birds from 97 species, the highest ever. Pong Dam Lake, also called Maharana Pratap Sagar, is a man-made reservoir on the Byas River in Kangra. So now 3 important facts are coming out through our discussion. Byas River, man-made reservoir, and another name is Maharana Pratap Sagar. So dear aspirants, it spans 307 square kilometer and was designated a Ramsar site
in 2002. So two Ramsar sites, okay, have been discussed during today's online class. The sanctuary hosts over 220 bird species, including bar-headed geese, pintails, and herons. It is home to animals like sambar, leopards, clawless otters. The wetland supports diverse vegetation, including eucalyptus, acacia, and shisham. So, dear aspirants, we have already consumed 30 minutes, that is half an hour today. Now it's time to टेक लीव. एक छोटी सी गुजारिश, 699 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं पिछले 3-4 दिनों से. मैं बेताबी से देखना चाहता हूं 700, देख नहीं पा रहा हूं. क्या आप मेरी मदद करेंगे? Are you there to help me to see the magical number 700? Still today it's 699. So thank you for joining me and being a part of this live class, dear aspirants. My good wishes are always with you. So let me say good night to all of you. Bye bye.